Here and warm welcome to Ashish Kyal Trading Gurukul. It's fantastic to have you all here. This is Friday at 4 and what a move Nifty has given on the downside, on the upside, reverse sharply और बहुत ही स्ट्रॉन्ग ट्रेंड है नीचे ऊपर. ऐसे मार्केट में अगर आप अपना स्टैंड नहीं चेंज कर सकते हो फ्रॉम बेरिश टू बुलिश, बुलिश टू बेरिश with a blink of an eye, you will lose a lot of money. That is for sure because this market is not conducive for people who are not ready to change their stand and who are too much egoistic ही नहीं. निफ्टी को ऐसे ही करना चाहिए. भाव भगवान से, समय बलवान से दोस्तों, and that is what is a classic indication of what happened today. We can clearly see until yesterday the news were bearish. Definitely I was looking for much lower levels if 23,260 was broken. But Nifty did not break that and it managed to break above the level of 23,520 जो मॉर्निंग में ट्वीट किया था. and I also mentioned very clearly that if Nifty manages to break 23,520 on the upside, this will set the tone for coming days and it is going to result into a trend in that direction. And are you able to see that movement happening? I'm going to make you aware about one simple aspect as a trader that I do. I do not fight the trend. I look at the trend and I change my stand with a blink of an eye. I keep telling my mentees the very powerful way in which it will work for you if only you know the level where you have to turn your bearish trend to bullish, bullish to bearish. And by doing that, you not only save money on the opposite side, but you also make money when the trend is there, like happened today. Classic move on the upside exactly from 10:30 AM. मैंने कल एक टाइम भी ट्वीट किया था, अगर आपने ट्वीट फॉलो किया होगा तो, that 10:30 AM is the time of time cycle. I mentioned opening hour is going to be crucial. 23,260 important or 23,520. Let's see which side the market breaks. It chose to break 23,520 and from there we can see 400 points up. In a nutshell, Nifty rallied by more than 550 points and people who were not ready to change their stand lost a lot of money, and people and traders who were okay to change their stand basis of the price action क्योंकि भाव भगवान से made money in today's market and that's how it has to be. So overall market क्या व्यू है, क्या लग रहा है, आगे बढ़ के देखेंगे दोस्तों. But it's fantastic to have you all here. Mukesh, Salman, great to have you here. Nilesh, Shalini, always amazing. And Shalini is saying you are a true magician. Thank you very much for that. महाराष्ट्र इलेक्शन का आउटकम कुछ भी हो, अडानी को जो करना है करे, बाजार बता रहा है, मुझे फर्क नहीं पड़ता है. Adani news is a big news. Definitely, it should impact markets. It should impact bonds. It should impact credibility. लेकिन market क्या बता रहा है, उसे फर्क नहीं पड़ता है because we have already corrected from the levels of 26,200 to the low of 23,260, which is 40 points just overshooting our target of 23,300 levels. What a move Nifty has given basis of this simple topping head and shoulder pattern, and it was simply fantastic. The move and नीचे का जो move अभी कंप्लीट हुआ है वेव थियरी के हिसाब से क्या, I'll show all of that things together. बट एक चार्ट में दिखाना चाहूंगा दोस्तों, जो चार्ट मैंने पब्लिश किया था यहां पर है वो चार्ट. दिस वाज पब्लिश्ड on 11th of October 2024 before the fall happened in monthly research report which is published under Astra program. Astra किसी ने लिया हुआ है, Astra कोर्स जो हमारा है वो कोर्स में एलियट वेव के एक्सप्लेनेशन है, निफ्टी की डेली रिसर्च है, मंथली रिसर्च है, और ये जो चार्ट आप देख रहे हो it was discussed in a webinar and similar chart was published in the Astra monthly research report. If you know, Rahul is from Astra, Neelam is from Astra. प्रोड्यूसर साहब Astra के लिंक शेयर कर दीजिए, काफी सारे जन जो Astra में नहीं है. ये एक साल का एक पूरा निफ्टी का मंथली से लेके शॉर्ट टर्म तक का व्यू विथ लर्निंग ऑफ एलियट वेव, ये सारी चीजें हैं इस अस्त्र के अंदर. तो आप वो लिंक पे जाके देख सकते हैं बाद में. तो ये चार्ट होने के पहले का था, ये चार्ट था बेसिस ऑफ वेव थियरी
and basis of 55 days time cycle that Nifty is going to come on the downside. And if you look at this chart, this level was marked right down here. देखना, डेट भी लिखी है, 4 नवंबर का टाइम था, डिले हुआ. ये जो जोन है, दिस इज द साइकिल जोन. And if I look at the cycle zone and the latest chart now, if I share that chart across with you all, this is the latest chart of how it happened to the day right now. Okay, can you see this? Can you see this? This is the latest chart, how it happened to the day right now. The move which was captured right away from that 25,200 की यहां से ऊपर जाएगा एक लेग, वो भी मेंशन किया था कि यहां से एक लेग ऊपर जाना चाहिए, देन वी विल कम डाउन. मैं एक्सपेक्ट कर रहा था 4 नवंबर, डिले होके रेड लाइन तक आ गया, लेकिन ठीक है यार, व्यू तो सही था, टारगेट भी आया और 23,300 का टारगेट था, 260 का लो बना और वहां से 550 पॉइंट्स. व्हेन वाज द लास्ट टाइम डिड यू सी दैट अप मूव? ये था मूवमेंट. एक और चार्ट मैं आपको दिखाना चाहूंगा, बिकॉज दिस शोज द मेथड एक्चुअली वर्क्स. You should understand these methods are this was again published in our monthly research of Astra program, which I'm going to do again. आज एक और monthly research में publish करूंगा वहां पे, जहां पर मैं आने वाले वीक्स और मंथ का टारगेट वहां पर वापस से दूंगा. एंड ये तो बड़ा चार्ट हो गया. छोटे चार्ट पे अगर हम देखें, नॉट ऑन सच अ बिगर टाइम फ्रेम, इफ आई लुक एट एन आवरली चार्ट, let me share that also. I'm just trying to show you it works. I'm not trying to boast anything about myself. What I'm trying to show you is that it actually works. If you're looking at this chart, are you able to see the screen, guys? If you are looking at this specific chart, यहाँ पर था निफ्टी, expected था नीचे का move, and we have, this is from October. And what happened? Let us just see that also. This is what has happened so far. This is the chart in the morning when I took the snip. अभी तो 23,800 के भी पार हो चुका है. Clearly the wave pattern, the time cycle are absolutely in sync. तो अभी क्या करना? चलिए, ये तो बात हुई थी अक्टूबर में और ये अभी तक ऐसा हो चुका है, ये मैं आपको दिखा रहा हूं. अभी इसके बाद में करना क्या है? अकबर कह रहे सर बिग फैन ऑफ यू, थैंक यू वेरी मच. एक व्हाट्सएप लिंक शेयर कर दीजिए प्रोड्यूसर साहब, सभी व्हाट्सएप पे भी ज्वाइन कर सके हमें. यहां पर मैं अभी चलता हूं लेटेस्ट चार्ट पे. चलिए, जो हो गया, व्हाट इज नेक्स्ट एंड व्हाट डू वी हैव टू ट्रेड एंड हाउ डू वी हैव टू ट्रेड नाउ इज व्हाट वी वांट टू सी. So if I come to the latest chart of Nifty now, let me just share that across on the Zoom platform. And Adani के स्टॉक से क्या लेना देना है मार्केट को, ऐसा लग रहा है फिलहाल. ये निफ्टी का लेटेस्ट चार्ट है. एवरीवन, आर यू एबल टू सी दिस चार्ट विथ मी? आर यू हियर एवरीवन? ये चार्ट दिख रहा है यहाँ पे? Okay, so if you are looking at the latest chart of Nifty, you can see that we completed A, B, C, D, E down. This was my time cycle of 18th November, final line. थोड़ा सा और लेट हुआ इस टाइम, ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट लिया, एंड ये ट्रेंड लाइन मैं नहीं, आप भी बना सकते हो. देखो ना यार, सिंपल सा ट्रेंड लाइन है, सिंपल सा ट्रेंड लाइन है जो कनेक्ट कर रहा है यहां पर का लो, this level. Can you see that? Simple trend line. Can you see that? And can you see that again? Very clearly. This was the junction of the final time period था ये वाला red line, which was the junction of final time period, जो हमने काल चक्र में भी देखा. Last weekend we had काल चक्र, was simply fabulous, guys, loved it. And यहां से हमने reversal बनाया है. We have managed to close about not only yesterday's high, we managed to close about past 5 days of high levels. एक ही कैंडल ने 5 दिन के लेवल्स को निकाल दिया. As a trader, very important thing that you have to understand is that when to change your stand. Okay to change your stand with a blink of an eye if price action confirms. ठीक है. Secondly, apply the simple concept of trend line, support and channel. Third, know when the time is changing. Okay, very important. Know when the time is changing, because यहां पर मैंने देखा यार टाइम सिंक में है, ट्रेंड लाइन सपोर्ट आ चुका है, न्यूज वर्ड्स आ चुकी है. ठीक है,
कल तक का सिनेरियो माहौल बेरिश ही था, क्योंकि निफ्टी ने पुल बैक नहीं दिया था, बैंक निफ्टी ने दिया था, निफ्टी का पुल बैक बिल्कुल भी नहीं था। तो कल देख के लग रहा था यार यहां पर अगर ये ब्रेक डाउन दे देगा तो बड़ी मंदी आ जाएगी नेक्स्ट 40-45 दिन तक के लिए, फॉर 45 डेज। बट प्राइजेस मैनेज टू प्रोटेक्ट दैट लो, मे बी बुल्स को बचाने के लिए। एंड वहां यहां से जैसे ही कल के दिन का हाई निकला, which was around 23,520 and a level which I have mentioned and tweeted in morning, we saw the rocket on the upside. From that 520, Nifty crossed even 920 levels, more than 400 points on the upside. So as a trader, it is very important for you to change the stand when the levels change. But Twitter पे बहुत सारे जन वो चीज समझ नहीं पाते, वो कहते आप तो कल तक बेरिश थे आज बुलिश हुए, तो ठीक है ना यार, पैसा तो बना। So is it okay to change the stand or is it okay to lose money? Tell me one thing, ego first or money first? कौन कौन है, कौन सी चीज पहले आनी चाहिए? आपका ईगो, नहीं मैं तो बेरिश था, मैं तो नीचे का ही मूव देखूंगा, या पैसा बन रहा है यार छोड़ो ना, बेरिश थे पैसा बन रहा है, रिवर्स हो गए तो पैसा बनाओ ना यार। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि वॉट एवर वर्क्स यू मेक दैट हैपन, क्योंकि भाव भगवान छे, समय बलवान छे, which means price is God. If you respect it, you do what it suggests. Okay, that's very important. So I was waiting for this today's first 1 hour of move, which was going to decide the trend, and it happened. Now, what is next from here? We have completed a diametric pattern. If you look at it, Nifty is moved down in the form of a diametric pattern. So Nifty entire down move is in form of diametric pattern, and prices are okay, and prices reversed up now. Probably this looks to be okay, probably in form of wave F. This means one minor dip is possible after few days of consolidation. कब होगा वो भी बताऊंगा मैं टाइम के साथ। ओके, यहां पर कैसे देखना है और कैसे इसे ट्रेड करना है, मैं टाइम के साथ आपको ये चीज बताऊंगा। यहां एवरीवन इज एबल टू सी माय स्क्रीन, राइट? स्क्रीन दिख पा रही है ना मेरी? ओके, व्हाट्सएप ग्रुप फिर से सबके साथ शेयर कर दीजिए, 2-3 बार बीच बीच में शेयर करते रहिए, लोग जुड़ पाएंगे। प्लीज इंश्योर दिस इन एवरी वेबिनार। एंड फ्रॉम हियर, if I go to a 15-minute chart now, 15, 1 hour time frame chart, any question on this? Which means this low of 23,260 is sacrosanct. अगर 23,260 निकल गया तो बड़ी मंदी है 1 महीने के लिए, कम से कम 1 से 1.5 महीने की वी विल हैव मंदी ऑन द डाउन साइड। साथ ही में मैं अगर यहां पर अडानी का स्टॉक देखता हूं, अडानी एंटरप्राइज, मैं पोर्ट पे बुलिश हूं दोस्तों, टू बी ऑनेस्ट मेरा इन्वेस्टमेंट भी है, लेकिन अगर मैं अडानी एंटरप्राइज देखता हूं तो यहां पर मूड कुछ अच्छा नहीं लग रहा है मुझे, क्योंकि एंटरप्राइज का चार्ट, जैसे कि कल भी मैंने ट्वीट किया था, यहाँ पर डेली टाइम फ्रेम चार्ट पे ये आप देख सकते हो, ये फ्लैट करेक्टिव पैटर्न लग रहा है। वेव ए कंप्लीट हुआ, बी कंप्लीट हुआ, सी लेग चल रहा है, तो यहां पर फिलहाल अडानी ग्रुप के स्टॉक्स में प्रेशर बना रह सकता है। पोर्ट में मैं इसलिए कमेंट नहीं करना चाहता क्योंकि मैं खुद इन्वेस्टेड हूं, तो मैं क्यों कमेंट करूं। और यहां पर अडानी एंटरप्राइज पे शायद नीचे 1 कंप्लीट होगा, पुल बैक में 2 आएगा, देन वी माइट हैव अ थर्ड वेव, फोर्थ एंड फिफ्थ, दैट्स हाउ इट माइट लुक लाइक। देखते हैं जब तक ये 22,900 इंटैक्ट रहता है। बैंक निफ्टी पे आके मैं अगर देखता हूं, ओके, यू कैन ऑल्सो, people on YouTube, if you are liking this, then do ensure you are sharing across you are commenting there and you are sharing it across to your friends and joining me on the Zoom platform. Zoom की link मैं share कर देता हूँ. You can also invite your friends and everyone to join me now. Zoom की link share नहीं की है YouTube पे क्या अभी तक? Let me just share that across. Just give me a second and let me, on the YouTube, I'm just sharing it across. So this is the link of Zoom platform, and everyone, you can join me on the Zoom platform. Please make a note of these things so that people can join me on the Zoom also. Now, going back to my chart, where is my chart gone? Just a second. Here it is.
let me just reshare my screen across and put my chart over to you. This is Bank Nifty. Bank Nifty has a very, very important level where it took so much of support. It was the ultimate level from where we managed to bounce back. So Bank Nifty has managed to protect that low is very crucial. That's Bank Nifty. Now I'm coming back to Nifty and I'm going to come back to the chart of 1 hour time frame. Okay. यहाँ पर 1 hour time frame chart है, आप देख पा रहे हैं. This is Nifty 1 hour time frame chart. Everyone, are you able to see this here? So if you're looking at this chart, the fall on the downside of 23,000, 24,800 पे neckline था, head and shoulder pattern. That neckline was broken. Nifty went sharply on the downside and we achieved the target at 23,300. We are trying to reverse back from that low back on the upside. Are you able to see this? Now, this chart, if you look at it, this cannot be more accurate than a textbook. और अगर ये head and shoulder pattern आपने पहले देखा होता जब बात हुई थी 11th October के आसपास, you can see how it behaved all the way on the downside. From here, what we can expect is right now Nifty looks to be forming a wave E completed here. We might be in the form of wave F, which is ongoing. Okay, wave F फिलहाल के लिए ongoing है. Usually F and B will relate time wise. Price wise तो हो चुका है. F and B will relate time wise. So if I look at B wave, this is the time that B wave has taken. I'm now calculating how much F will go and then maybe a dip on the downside that G leg can take. So if I measure this on the downside, just give me a second, the date range. Okay, this is purely on the wave theory I'm talking about. And we might say the completion is around here. So approximately it has taken 7 days. That's what it is showing me. Approximately it has taken 7 days on the downside. And just a second. And if you're looking at this, यहाँ पर, if I measure this and I measure it projecting from the low of wave E, this is not the lowest point, but ठीक है, थोड़ा सा projection अगर मैं करता हूँ आगे की ओर, तो approximately I think it's going to be by 28th of November, Thursday, when wave F should be complete. So wave F जो हम यहाँ पर देख रहे form होता हुआ basis of the wave theory might complete. So I'm just going to write down. So F can complete. This is just approx, no rules. These are guidelines for diametric pattern. F can complete. Okay. Time wise, I'm talking about by 28th November. Okay, 28th November, which means coming expiry Thursday. तब F complete होना चाहिए. So हो सकता है यहाँ से हम शायद ऊपर चले जाए. Maybe we might come down and then we can go up, complete F, and then we can again have a G wave possibly showing the dip on the downside. So this is how F can go. F can also be deeper retracement. G can be much bigger, but rules नहीं है, guidelines है. So यहाँ पर overall जो possibility हम देख रहे हैं फिलहाल के लिए, this is how wave F can be. And let me just take a snip of this so that I can just save it across and keep it for my reference. आप भी ले सकते हो यहाँ पर. And this is how it's looking for me right now. And दोस्तों होता क्या, मैं आप लोगों के साथ जब बात करता हूँ और ये सारी चीजें मैं देखता हूँ तो बहुत सारी चीजें मुझे समझ में आती है जो मैंने शायद मिस कर दी हो. तो आप लोगों से बात करके मैं खुद भी सीखता हूँ काफी चीजें. That's me. That's how it works for me. And there are someone who was asking, sir, how do you forecast so accurately all the time? And the secret is when I teach, when I talk, I love doing that. When I do that, I see things that I didn't see when I was doing it alone. When I'm with you, I see more things than I'm doing it alone. And it works for me.
तो यहाँ पर आई एम ऑलरेडी शेयरिंग अक्रॉस, सो 28 वी कैन रिमेन बुलिश अंटिल देन नहीं, 28 एफ वेव के लिए है। ओके, सो एफ वेव जरूरी नहीं है वन साइड ऊपर जाएगा नीचे आएगा, इट कैन बिहेव इन दैट फैशन। सो पॉसिबल है कि एफ वेव यहाँ पर फिलहाल है, so we might go up, we might come down, we can go up. That's how F can behave. So before completing and moving back on the downside, so you have to look at that. So this is the path that I'm showing. Nifty path ahead for ongoing pattern will complete by 28th November, post which we can again see short term sell off. So this is complete path as per neo wave। यहाँ पर आप देख रहे हैं, so this can be F wave which I am showing you here, okay, and उसके बाद G leg आएगा। ये कब तक वैलिड है? सो F का मैक्सिमम अलाउेबल लिमिट कितना है, उसके ऊपर नहीं जाना चाहिए। आइडियल केस सिनेरियो वो क्या है? दैट इज द लिमिट ऑफ वेव डी, सो विच मीन्स 24,200 के ऊपर F आइडियल केस सिनेरियो में नहीं जाना चाहिए। अगर उसके ऊपर गया तब देखेंगे शायद बड़ा पैटर्न कंप्लीट हुआ नीचे की तरफ। सी, पाथ फोरकास्टिंग एक चीज है और साथ में उसको कैसे ट्रेड करना है वो दूसरी चीज है। ऑलवेज रिमेंबर, फोरकास्ट कैन गो रॉन्ग लेकिन प्राइजेस कैन नेवर गो रॉन्ग। जो चार्ट दिखा रहा है, जो प्राइजेस हो रहा है ट्रेड, वो रॉन्ग कैसे हो सकता है? वो तो आपके आंखों के सामने ट्रेड हो रहा है। सो पाथ कैन बी रॉन्ग but price cannot be wrong, so you have to adjust your path. You cannot say नहीं नहीं ये तो नीचे ही आना चाहिए। You can't be egoistic in market. If कल bearish थे आज bullish है, what's the problem? That's how it has to be. That's how you should be looking at the market and you should be looking at it, making sense? And then फिलहाल के लिए ये G को कैसे राइड करना है, सॉरी F को कैसे राइड करना है? टाइम साइकिल यूज करके। आज का टाइम था 10:30 से 11:30 का, वो टाइम जोन में से पॉजिटिव कैंडल बना, classic ride. Are there people from Kal Chakra and the Brahmastra batch? People, are you seeing this? Are you seeing how it works? And वैसे ही वापस से नेक्स्ट टाइम साइकिल देखना है आपको। वो टाइम से जो हमने वीकेंड पे किया था काल चक्र में, वो टाइम से आपको देखना है कि वापस रिवर्सल कब हो रहा है। जहां से रिवर्सल हो रहा है फिर से लॉन्ग पोजीशंस क्रिएट करनी है। फिलहाल के लिए क्यों लॉन्ग करना है? क्योंकि डेली कैंडल बुलिश हो चुका है, प्रीवियस हाई के ऊपर निकाल दिया, प्रीवियस लो के ऊपर निकाल दिया, क्लोज भी प्रीवियस हाई के ऊपर किया, तो ये पूरा हो चुका है और नेगेटिव न्यूज के बावजूद ऐसा हुआ है। तो एक चीज सोचने वाली ये भी है इंपॉर्टेंट दोस्तों, ऑल ऑफ दिस थिंग्स आर हैपनिंग डिस्पाइट ऑफ स्ट्रॉन्ग बेरिश सेंटिमेंट, स्ट्रॉन्ग बेरिश न्यूज, एफआई सेलिंग। ये सब होने के बाद अडानी का जो इवेंट हुआ उसके बाद भी निफ्टी ने ऐसे बिहेव किया विच शोज स्ट्रेंथ। बट अगर निफ्टी कल के दिन 23,400 23,450 ब्रेक कर देगा, 23,260 ब्रेक कर देगा, तो बॉस एफ कंप्लीट हो गया और जी शुरुआत हो गई। बिकॉज आइडियल के सिनेरियो एफ शुड टेक टाइम, बट भाव भगवान से अगर नीचे का मूव शुरू करना है तो इसे 23,450 23,260 ये दो लेवल्स को ब्रेक करना होगा। और ये जैसे ही ब्रेक होगा जी लैग शुरू होगा। जी का टारगेट कितना हो बाद में बताऊंगा, क्योंकि उसके लिए मुझे एफ को परखना है क्लोजली। एक चीज वेव थियरी में हमेशा ध्यान रखना दोस्तों, whenever you want to trade on the basis of wave theory, you need to understand the ongoing leg for the next leg। तो ongoing मूव में ये तो फिलहाल वेव ए फिलहाल ongoing है, ये तो ongoing है, अभी शुरुआत हुई है। तो हमें 3 दिन में एफ को राइड करना है, उस पे पैसा बनाना है। एफ एक बार जब कंप्लीट होने लगेगा तब जी के लिए राइड करेंगे। तो शॉर्ट टर्म के लिहाज से ये ओवरऑल स्ट्रक्चर है, एंड देन वी विल सी हाउ इट विल हैपन। बीजेपी आएगी या महाराष्ट्र में कांग्रेस आएगी या दूसरी गवर्नमेंट आएगी, उससे फर्क नहीं पड़ना चाहिए आइडियल के सिनेरियो, बिकॉज वी हैड आवर सेंट्रल इलेक्शन जस्ट सम टाइम बैक। The impact of Maharashtra election is going to be less because it is already Mili-Juli Sarkar. So let's see how it spans out. It's not going to be that crucial, which will change the market trend or sentiment. That's how I'm looking at it. But market है यार, sentiments कभी भी change हो जाते हैं. So you have to be keep looking at all of those things.
इस तरीके से आपको देखना है। अभी एक काम करते हैं, सभी लोग अस्त्र की लिंक शेयर कर दीजिए जिन्होंने अस्त्र के बारे में जानना है, क्योंकि मैं एक लेटेस्ट मंथली रिसर्च वहां डालूंगा। साथ ही में एक काम करते, कल के दिन में हम डिटेल में चले गए टाइम साइकिल के बारे में देखने के लिए, कैसे मार्केट को टाइम के बेसिस पे ट्रेड करना है। कल की एक मास्टर क्लास है 23 नवंबर मॉर्निंग 11 AM लाइव होगी जूम के ऊपर, और लिंक शेयर करेंगे। यहाँ पर लिंक शेयर कर दी गई है। सो इफ यू वांट टू बी अ पार्ट ऑफ दिस मास्टर क्लास एट 11 AM, वेयर आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट कौन से दिन में, नेक्स्ट वीक में कौन से दिन में आपको बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलेगी फिर से, या सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिलेगी, कितने बजे, कैसे ट्रेड करना है, ये सारी चीजें मैं डिस्कस करूंगा। तो कौन कौन है मेरे साथ में फॉर टुमारोज 23 नवंबर सैटरडे 11 AM मास्टर क्लास? फ्री है, आप सभी जुड़ सकते हैं इस मास्टर क्लास में। और अगर आप हो तो मुझे एक कंफर्मेशन डालिए यहाँ पर, लिंक पे आप जाके रजिस्टर करिए। ये जूम पे होगा, क्योंकि जूम पे इंटरेक्शन बेटर हो पाता है। यूट्यूब पे भी लिंक डाल दीजिए प्लीज, सो एवरीवन कैन जॉइन मी देयर। और साथ ही में हमारा ब्रह्मास्त्र शुरू होने वाला है दोस्तों 11 दिसंबर से, 11 दिसंबर, और ब्रह्मास्त्र इज गोइंग टू स्टार्ट। हमारा प्राइवेट टेलीग्राम ग्रुप हम फॉर्म करने वाले आज के दिन। जो लोग जुड़ चुके हैं उनका एक ग्रुप फॉर्मेशन पेंडिंग है, मुझे पता है। जो अपकमिंग ब्रह्मास्त्र बैच है उनके लिए तो मैं वो ग्रुप फॉर्म कर रहा हूं आज के दिन। If you are not a part of this Brahmastra, then you have to be a part of it. लिंक आपके साथ शेयर कर दी गई है। You can be a part of this lovely journey where you will be getting access to काल चक्र वीडियोस। काल चक्र फिलहाल के लिए एक्सक्लूसिवली हम ब्रह्मास्त्र वालों के लिए रख रहे हैं। सो जिन्होंने मिस कर दिया काल चक्र, उनके लिए भी अपॉर्चुनिटी है ब्रह्मास्त्र में जुड़ने के लिए, और आप 10K का टोकन पे करके रजिस्टर कर सकते हैं यहाँ पर ब्रह्मास्त्र के साथ बनने के लिए। तो ये था ओवरऑल व्यू। मैं बहुत ही क्विकली एक पोल भी ले लेता हूं दोस्तों। इफ यू आर अ पार्ट ऑफ ब्रह्मास्त्र और यू वांट टू बी अ पार्ट ऑफ दिस वंडरफुल जर्नी ऑफ ब्रह्मास्त्र, मैं यहाँ पर पोल चेक कर लेता हूं एक बार, which is I'm just launching here clearly, and you can participate in the poll. I'm open for questions, guys, and I'm going to love talking to you all at 11 AM on 23rd, which is going to be super master class. So अगर आप जुड़ना चाहते हैं ब्रह्मास्त्र में तो जुड़ सकते हैं, where we will be learning this science of time, neo wave, algos I'm going to give across for stock selection, for multi-bagger stocks, momentum stocks, जो मैं use करता हूँ for खिलाड़ी number 1 and all of those things. So I do that and I'm going to give it across to you all once you are onboarded for this Brahmastra session. Okay, there are questions coming up, sir. What's the view for Monday or Nifty? Monday के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे कल, तो कल जुड़िए संदीप आप। मंडे को डिटेल, मंडे के बारे में, ट्यूसडे के बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे हम कल के दिन में, शनिवार को 11 बजे, क्योंकि वहां पर मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। ये मैं थोड़ा सा एडवांस्ड व्यू में बता रहा हूँ कि किस तरीके से हम देख रहे हैं फिलहाल ऑनगोइंग पैटर्न को। Okay, there is another question here, sir. I'm already a part of Brahmastra. Fantastic, Sanjeev. Glad to know you are a part of Brahmastra. Awesome, guys. और साथ ही में एक और चार्ट जो बहुत ही इंटरेस्टिंग आप देख पाएंगे वो है निफ्टी का 15 मिनट्स टाइम साइकिल। अभी मैं नहीं दिखा रहा हूँ, मैं कल दिखाऊंगा। 15 मिनट्स टाइम साइकिल निफ्टी पे, बैंक निफ्टी पे, और कौन सा ऐसा स्टॉक है जो फिलहाल आपको नजर बनाए रखनी है टाइम के बेसिस पे बाय साइड पे। तो वो सारी डिस्कशन हम करेंगे। गेन लेवल की बात करेंगे, 24,108 है गेन लेवल। उसके बारे में हम बात करेंगे कि कैसे वो गेन लेवल पे ट्रेड करना है, ये सारी चीजें हम देखेंगे कल के दिन में। सो ऑसम गाइस, फैंटास्टिक टू हैव यू ऑल हियर। लव टॉकिंग टू यू ऑल। दिस इज फ्राइडे एट 4। जस्ट जाते जाते एक और चीज मैं फाइनली बोलना चाहता हूं आप लोगों के साथ। एज अ ट्रेडर, आई एम अ पैशनेट ट्रेडर, आई लव ट्रेडिंग, and you can see I've authored a book which is written there. If you are not able to change your stand with a blink of an eye, you are not going to make money in this market. If you want to make money in this market, then you have to keep your ego aside and respect what prices are doing and trade basis of that. So price action, time, then club across along with wave theory, Kal Chakra and those things, and it will work for you.
So that's how important it is. Is the bottom then? नहीं. F wave है, देखते हैं वो 24,200 क्रॉस करता है कि नहीं, फिर हम बोलेंगे कि बॉटम है कि नहीं. क्या फर्क पड़ता है? Anyways, you should have been riding right from 24, 23,520 levels. If you didn't enter, you missed it. Do not have that fear of missing out. I'll tell you the time when you will be right again for you to enter in this market. Okay, चलिए, thank you very much जुड़ने के लिए. And people on YouTube, put your comments, like, share the channel so that I know you are loving it. And have a wonderful time. Become a wonderful trader. Ashish Kyal signing off.